Hi, so we are taking the discussion for the of the paper written by JV Meenakshi Mam, Trends and Patterns in the Triple Burden of Malnutrition in India. So if you have not seen part one of the recording, please see that. Then only it will make sense. And we have already discussed that although there is an income growth in the economy, but वो income growth हुई तो है, लेकिन undernourishment कम नहीं हुई है, malnutrition कम नहीं हुआ है. दूसरा, वो यह भी कहती हैं कि जो फूड सिक्योरिटी है, जो न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी है, वो सिर्फ इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आपके पास इनफ फूड हो. वो ये भी कहती हैं कि आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है कि आपके पास रिच वैरायटी ऑफ सोर्सेज हो, इंश्योरिंग द डाइट क्वालिटी. और फिर वो अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के बारे में बात करती हैं. यही ट्रिपल बर्डन ऑफ माल न्यूट्रिशन है. Malnutrition का अपने में अर्थ है that you're not properly nourished. So it could be you are overnourished, you could be you are undernourished. And then we talked about few trends in undernutrition. Talked about the data and the stunting. So let's take the discussion further about the stunting first. So this was about the moderate stunting. Now they say that as far as about the severe stunting is concerned, so they say that there has not been the commensurate progress in the severe stunting also. So severe stunting also has remained unchanged between 2005-06 and 2011-12, 2014, right? So please write, with few exceptions. With few exceptions, there has not been a commensurate progress in reducing the degree of severe stunting. Severe stunting. So there has not been much change between 2005-06 and 2014 data as far as severe stunting is concerned. So the magnitude of severe stunting also, it remains very high. This is there. So the magnitude of stunting remains high. With 1/5 to 1/3 of young children malnourished. In most Indian states. In most Indian states. Right. तो आप ये ध्यान रखिए कि हमने ट्रेंड्स इन अंडर न्यूट्रिशन के बारे में बात करी है. उसमें पहली बात हमने स्टंटिंग की करी है.
ठीक है, तो आप ये कुछ पॉइंट्स लिखेंगे स्टंटिंग के बारे में बताते हुए अपने आंसर में। आप सिवियर स्टंटिंग, मॉडरेट स्टंटिंग को डिफाइन करेंगे, आप ये पॉइंट्स लिखेंगे अपने आंसर के अंदर फॉर स्टंटिंग। जो दूसरी बात आप करेंगे अंडर न्यूट्रिशन के अंदर, वो आप बात करेंगे अंडर वेट चिल्ड्रन की, राइट, प्रेवलेंस ऑफ अंडर वेट। ये ट्रेंड्स इन अंडर न्यूट्रिशन में तीन अलग अलग चीजें हैं, ये तीनों चाहिए आंसर के अंदर। हाँ। इसी का सेकंड पॉइंट लिखिए। आप ना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है, और जितना पूछा हो उतना आंसर दीजिएगा, राइट। आपसे पूछा, मान लीजिए ओवर न्यूट्रिशन के बारे में, आप सब बता रहे हैं। आपसे पूछा उन्होंने सिर्फ अंडर वेट के ट्रेंड्स हैं, आप स्टंटिंग के ट्रेंड्स भी बता रहे हैं, ये सब नहीं चाहिए आंसर। जो पूछा है वो दीजिए ठीक से आंसर। और अगर उन्होंने कोई कंपैरिजन ऑफ रीडिंग्स पूछा है तो बस वही आंसर दीजिए, अपने मन से कुछ भी मत लिखने लगिए। आप ये मत करिए करिए कि भाई माल न्यूट्रिशन के बारे में कुछ बात हुई है, चालू हो गए, जो भी मैम ने बोला वो एक 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 चीज लिख के चले जा रहे हैं। क्वेश्चन रीड करिए आंखें खोल के कि वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसको आंसर करा करिए। जो पहला वाला केस था वो स्टंटिंग के बारे में था, अब ये अंडर वेट के बारे में। वो ये कहते हैं कि जहां तक अंडरवेट चिल्ड्रन के बारे में बात है, वो भी मोरलेस सेम ही है स्टंटिंग जैसा, इज ऑल्सो मोरलेस सेम। So what it shows is that there is some evidence of leveling off in the prevalence of underweighting. So maybe the underweighting has reduced, but then it levels off. It does not reduce further after this, right? The prevalence of underweight. So please write first. The prevalence is balance. The prevalence of moderate underweight has declined in all states. सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसी का, अंडरवेट का। जैसे कि स्टंटिंग के बारे में कहा था कि स्टंटिंग का प्रेवलेंस भी कम हुआ है, लेकिन वो और कम नहीं हो रहा जितना हो गया, सो लेवलिंग ऑफ है, वही चीज यहां पे भी है। एज विद द केस ऑफ स्टंटिंग, देयर इज सम एविडेंस of leveling off of decreases in better off states.
if the comparison is restricted to 2005-6 and 2012-14 data. वो ये कहते हैं वो जो आपका रैपिड सर्वे ऑन चिल्ड्रन डेटा है, राइट, RSOC डेटा फॉर 2013-14, तो आप ये पाएंगे कि और ज्यादा कंटिन्यूड डिक्रीजेस हैं इन दी अंडरवेट आल्सो. बट अगर आप ये पॉइंट्स ऐसे लिखते हैं, आप ये बता रहे हैं कि अगर आप इस डेटा को देखते हैं तो ये चीज निकलती है, आप इस डेटा को और देखते हैं तो एविडेंस कुछ और भी निकल सकता है, दिस गिव्स अ बेटर आंसर, राइट. तो पता लगता है कि आप रीडिंग पढ़ के आए हैं. बट एविडेंस, बट कंटिन्यू डिक्रीजेस in underweight is seen if RSOC data for 2013-14 is used. इसके बाद मैम ने कुछ कंपैरिजन करा है RSOC डेटा में और DLHS डेटा में और एनुअल हेल्थ सर्वे डेटा में. ये मैं चाहता हूँ आप रीड करें. एक बात उन्होंने कही कि अगर आप अंडर न्यूट्रिशन को देखते हैं, राइट, so the main manifestation of undernutrition is anemia in adults. So if the person is underweight, so this can result in anemia. And if you have the deficiency of iron, that is anemia, you can be prone to many kind of infections, right? When you're prone to many kind of infections, your working capacity is reduced, and at the same time your income capacity is also reduced, right? One thing. Among pregnant women, it will have an adverse effect on the pregnancy outcomes also. That is also one of the things. So there is a problem in being underweight also. So what is that problem? That is going to be your next point. Anemia is the manifestation of undernutrition. Undernutrition, right? So, and it can result from the improper food intake or lower food intake, inadequate dietary intake, so of particularly of iron, and it can result in severe kind of infections also. Being anemic, results in diminished work capacity. Diminished work capacity and lower earning potential.
Okay. And the among pregnant women, it can also lead to adverse pregnancy outcome. So an underweight pregnant women uh, might not be able to give to a healthy child, might not be able to give a birth to a healthy child. That is the problem, right? So among pregnant women, second point among this point. So I write answers in terms of points. You may write it in paragraphs or in points, but while checking the paper, I think it is easier to check points, right? Among pregnant women, can also lead to adverse pregnancy outcomes. Mhm. Right. So, and the problem is that anemia has not only not declined, it has increased over time. So the prevalence of anemia is that over time, if you look at it, it has not declined, it has increased. Right. Anemia. Anemia. Am I spelling it right? Yeah, anemia. Has not only not declined, rather it seems to have increased, right? It seems to have increased. Then she has given certain data about this. She has given certain data about this. Uh, so, which I'm not writing it here, but I wanted to read the reading and just write few data points here and there across the NHS data and the HS data. Uh, so the point which she is making is that although anemia is a widespread health problem, and it is not only limited to adult women, pregnant women, but also to children and adolescents. But there has not been any policy response to that. ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है जो कि ऐसा कोई एक्शंस ले रही है जो कि एनीमिक एनीमिया की प्रॉब्लम को कम करे, ये प्रॉब्लम, राइट? सो high magnitudes have not seen the kind of the policy response that is clearly warranted. हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी स्टेट ने कोई एज सच कोई प्रोग्राम्स नहीं है जो कि एनीमिया की प्रॉब्लम को कम करे, तो ये कह रही है, तो ये बात आपको लिखनी है. So the lack of improvement in anemia prevalence is consistent with the decreases in intakes of iron. आपका आयरन का इंटेक कम होता है, एनीमिया का प्रेवलेंस बढ़ता है, और गवर्नमेंट ने देखती है कि एनीमिया के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके क्या रिपरकशंस हैं वर्किंग कैपेसिटी पे, अर्निंग कैपेसिटी पे, तब भी इसके ऊपर कोई प्रॉपर स्टेट रिस्पांस, पॉलिसी रिस्पांस नहीं है. ये बात है. तो आपको कुछ एक दो पैराग्राफ्स रीड करने हैं, यू हैव टू राइट फ्यू पॉइंट्स आउट हियर. ट्रेंड्स इन अंडर न्यूट्रिशन में ही तीसरी बात मैम कर रही हैं ऑफ body mass index, right? So percentage of women who are thin, right? Percentage of women who are thin. So somewhere here, percentage of women
who are thin means body mass index less than 18.5. Body mass index less than 18.5. ये बात है. So ये भी लिखना है आप. ये तीसरी मैनिफेस्टेशन है अंडर न्यूट्रिशन की. पहली थी स्टंटिंग, दूसरी थी अंडरवेट, तीसरी है body mass and percentage of women of having the body mass index less than 18.5. So what thin BMI less than 18.5. BMI less than 18.5. ओके, सो वो ये कहते हैं कि जो जो दूसरा न्यूट्रिशनल जो दूसरा प्रॉब्लम है ऑफ द न्यूट्रिशनल आउटकम्स, द लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, वो है कि there are many women who are thin, I mean whose body mass index is less than 18.5. So what is body mass index? Weight in kilograms divided by square of height in meters. So body mass index is, right, weight in kilograms divided by square of height in meters. Square of height in meters. And the percentage of women whose body mass index is less than 18.5, they are considered to be very thin. So such women are thin. And they are the main reason of having BMI less than 18.5 is the lack of proper food intake. So this is resulting because of inadequate food intake. Resulting because of inadequate food intake. So one thing is that over time, this has reduced in almost all states. So the percentage of women who are thin, that has reduced over time. So that's a good thing, right? So over time, this percentage has clearly decreased in all states. With much of the decline occurring in last decade. So when she is writing, the last decade is 2005, 6, 2014. So the decreases were more rapid in the poorer states in Eastern India. The decreases were more rapid
poorer states. In Eastern India, right? For example, Bihar, right? Bihar saw a near halving the percentage of the undernourished, right? And she also says this, that this is the overall trend which has happened, and mostly this has occurred in the rural areas. So this body mass index has so the percentage of women who are thin, that has fallen, particularly in the rural areas. And because of the rural areas, you are seeing that the for the overall state, this percentage has declined. So these patterns are largely driven by trends in right. So it's a beautiful reading, but it needs to be read between the lines, and it has to be read with a huge amount of patience, right? Then you will understand it. Chaliye. So I'll stop out here and I'll talk about the trends in overnutrition in the next class, right? Make notes. Chaliye. Thank you, Beta.